Sharma classes. Today we are going to study about the Lambda and the Kappa variant that have been in news since last 4 to 5 days. And WHO has also, has also announced that Lambda and the Kappa variant, they have been now put into the category in the variants of concern. Variants of concern की जो category है उसमें अब lambda और kappa variants को रख दिया गया है WHO के द्वारा. We are also going to study in today's lecture what are variants of interest and what do you mean by the variants of concern, right? And how they are categorized. कैसे हम different variants को VOC और VOI में categorize करते हैं, ये भी आज हम पढ़ेंगे. So let's start with decoding the lambda and the kappa variants. Let us understand in which part of the country of the world these variants have been found. Let's understand their seriousness. And the class PDF will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. You can simply download the lectures, the PDFs, the notes and all the notifications from our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. The link is given below in the description box below the video. Let's get started. So WHO, that is the World Health Organization, has recently announced that the Lambda variant and the Kappa variant both are the variant of concerns. दोनों को ही variant of concern की category में डाल दिया गया है WHO के द्वारा. And this announcement was made in the weekly bulletin from June 2021. WHO mentioned that Lambda has been associated with substantive rates of community transmission in multiple countries with rising prevalence over time concurrent with increased COVID-19 incidents. तो ये community transmission से निकल कर आया है and it is known as C.37. The Lambda variant was first recognized in Peru and has been detected in samples dating back as early as December 2020. Currently, it is the most dominant variant in South American country as it accounts for more than 80% of the new cases. मतलब जो नए cases South American countries में especially पेरू में निकल कर आ रहे हैं उसमें से 80% जो cases है वो lambda variant के हैं. तो यानी कि इसीलिए इसको हमने डाला है variant of concern की category में. ठीक है. Before we move ahead, here's a small announcement for all of you. Unacademy has launched one subscription to Crack It All and it has provided now extra 10% discount for a limited period. This discount will be valid till 8 to 14th July. ये 10% का आपको extra discount Unacademy दे रहा है plus के subscription पर, combo subscription पर. अगर आप GS plus optional का combo pack लेते हो आपको 25% discount मिलेगा plus 10% discount you will get by using this code ARPITA10. अर्पिता 10 कोड यूज करके 10%, रेफरल कोड यूज करके 10% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट टिल 14th July Unacademy is providing. So total you will be given 45% discount if you take GS plus optional का प्लस सब्सक्रिप्शन. 1 year या उससे ज्यादा का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आप इस ऑफर में कवर हो जाओगे. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2022 अटेम्प्ट यू हैव 1 year फॉर द प्रीलिम्स टू गो, राइट? So here Unacademy is providing you guaranteed subscription till mains. जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं आएगा ना, मेंस 2020, तब तक आप Unacademy पर लेक्चर्स देख सकते हो. Unacademy promise with every 2 year subscription. अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो Unacademy promise, that means if by any chance your name is not mentioned, you do not clear any of the stage of UPSC, then even after taking 2 year subscription, then Unacademy promises you to give you 1 year extended subscription, okay, to prepare and achieve your goal. Unacademy notes worth 20,000 will be provided to you free of cost if you take Unacademy Plus subscription. They will be delivered physically to your home step, and test series worth rupees 30,000 free of cost will be given to you with your subscription. You can save big time on the Unacademy combo package. 45% का आपको discount यहाँ मिल रहा है. New batches are starting from 14th July. The links are given below in the description box. Make sure that you take your subscription फटाफट से at the earliest. Use code ARPITA10 to get 10% discount on your plus subscription. आपको अगर 10% discount चाहिए तो ये कोड यूज कीजिएगा ARPITA10, ओके? इससे आपको directly 10% discount मिल जाएगा. So links are given below. Make sure that you take your subscription today. Now the lambda variant, ये कहाँ पर dominant है? ये पेरू में dominant है. India has not yet reported any case of the lambda variant. अभी इंडिया में कोई केस नहीं आया है. Yes, पेरू में, South American countries में आया है. The strain was first identified in Peru in December 2020.
And lambda is the dominant variant. Why? Because more than 80% of the samples they are reporting they are carrying the lambda variant. Over here they can ask you question related to the bordering states of Peru. पेरू के बॉर्डरिंग नेबर्स कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा जा सकता है. पैसिफिक ओशन के बारे में पूछा जा सकता है. Until recently it was largely concentrated in the handful of South American countries, like over here we had Ecuador, we have Argentina. यहीं पर ही थोड़े बहुत केसेस यहाँ पर पाए जा रहे थे, but now it has been detected in more than 25 of the South American countries. That is why now it has become a variant of concern. Now previously it was known by its scientific name called C37. World Health Organization ने इसको पहले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में डाला था, अब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला है जून 2021 के मंथ में. ठीक है. सो द लैम्डा वेरिएंट इट हैज एटलीस्ट 7 सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस, मतलब कम से कम 7 म्यूटेशन 7 चेंजेस इसके अंदर आए हैं इन द स्पाइक प्रोटीन. डेल्टा वेरिएंट में 3 म्यूटेशंस है. दैट इज वाई सी डेल्टा वेरिएंट had 3 mutations, still it was the deadlier. Now lambda variant has 7 mutations, so it makes it even more deadlier. Okay, now it could have a range of implications. That means yes, obviously transmissibility will be increased. Antibodies जो अभी तक बन चुकी है लोगों की बॉडीज में वो उससे रेजिस्टेंस इसमें बढ़ जाएगा. ठीक है. और जो वैक्सीनेशन के द्वारा जो आपका नेचुरल इन्फेक्शन है, वैक्सीनेशन के द्वारा अगर एंटीबॉडीज बनी है उसको वो भी प्रभावी नहीं होंगी लैम्डा वेरिएंट के आगे, क्योंकि ये ज्यादा डेडलियर है. इट is the coronavirus spike protein that binds to a human protein to initiate the process of infection. So lambda variant has greater infectivity than the alpha, the gamma variants, which were found in UK and Brazil. And a study had been conducted which showed decreased effectiveness even of the Chinese Sinovac vaccine. जो चाइना का कोरोनावैक वैक्सीन है ना, उसके अगेंस्ट भी लैम्डा वेरिएंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है. सो इंडिया के लिए क्या कंसर्न है? देखो कापा वेरिएंट जो है ये भी बहुत ज्यादा concerned variant है इंडिया के लिए. It was first detected in India only, and more than 3,500 of close to 30,000 cumulative samples submitted by the GSAT initiative are of the Kappa variant. So that is why for India Kappa variant is a little more, you can say, variant of concern. Now let us understand what are the variant of concerns and what are variant of interest. Variant of interest means genetic changes involved are predicted or known to affect transmissibility, disease severity और immune escape. मतलब जो genetic changes हुए इस वेरिएंट में उसके बारे में हमें पता है, हम उसके बारे में जानते हैं, उसको ट्रीट. देखो डिजीज सिविरिबिलिटी भी हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, इम्यूनिटी को कितना एक्सकेप करेगा या कितनी इम्यूनिटी प्रभावित होगी वो भी हमें पता चल जाएगा, और हमें पता है ट्रांसमिसिबिलिटी क्या रहेगी, वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. ठीक है. बट वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है? वेरिएंट फॉर विच देयर इज एविडेंस ऑफ इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी. एविडेंस है कि जितनी ट्रांसमिसिबिलिटी एक वायरस की होती है उससे ज्यादा इसकी होने वाली है, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आता है. और व्हेन वी नो दैट हॉस्पिटलाइजेशन विल इंक्रीज, डेथ केसेस विल इंक्रीज, सीवियरिबिलिटी विल इंक्रीज, दैट मीन्स इट्स अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स. फर्स्ट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. Both of or 4 of these are variant of concerns because they are bigger threat. Second wave में हमने डेल्टा का देख लिया, थर्ड वेव में डेल्टा प्लस की बात हो रही है, तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स है. मतलब इससे सिविरिबिलिटी बढ़ेगी, इसका ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज्यादा है, इससे जो डिजीज सिविरिटी है या इम्यून एस्केप है वो भी बहुत ज्यादा रहेगा. तो दैट इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न. ठीक है. और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो वेरिएंट्स जिनके बारे में प्रिडिक्टेबिलिटी है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रहती है. ठीक है. तो यहाँ पर ये है लैम्डा variant or kappa variant. I hope you enjoyed today's lecture series. It was informative. Now देखो see, many of the hill stations right now we are witnessing the surge in the tourist revenge tourism हो रहा है. बिना मास्क के, without mask they are roaming around here and there in the hill stations. Now I request you all to please share this video with as much people as you can to spread awareness that right now is not the time to remove your mask and roam around openly like that. It is not the time. Still जब तक हम कोरोना वायरस को हरा नहीं देते तब तक हमको थोड़ा सा अभी एहतियात बरतना होगा. I know it's very tough to stay at home or to restrict our social engagements, but if you want your loved ones to enjoy their life, if you yourself want to enjoy your life, your health, then please follow the protocols that have been started by you can say shared by WHO and government. Stay safe, stay healthy.